everybody and welcome to Psych Easy with Nandini. I know as psychology का board exam था and because of so many issues I could not make revision videos on chapters other than chapter 7, but I'm here to help you out, analyze your paper, and let's see, without further ado, let's dive into that and let's see how the paper was. Okay, so section A I think was fairly easier. Let's try and answer the questions. So पहला question is Neha always scores well in school assessments and is appreciated for her sharp critical ability, reasoning and analytical thinking. ये तो बहुत ही easy giveaway है. It was componential intelligence because it is also called analytical intelligence, right? So this was a very easy giveaway. Second, a teacher notices that one of her usually calm and respectful students behaves aggressively during a group activity. She considers whether this behavior might be due to peer pressure and classroom dynamics rather than the student's personality. So this was situationism, क्योंकि situation determine करती है एक इंसान कैसे behave करेगा. So along with the internal factors, external factors also do play a role. So this was situationism. Third, Rohan failed an important exam. Instead of accepting that he did not prepare well, he insists that the teacher was biased and the exam was unfair. Which defense mechanism? This was rationalization because he's trying to make something seem true which is not true. So that is rationalization. Fourth, Meera always felt left out, low and incompetent as a child because her elder siblings were more successful. Now she works extremely hard to be the best in every task she takes up, according to Adler. Adler ने एक बहुत important concept दिया which is inferiority complex. So this was the answer. Then Ananya is known in school for honesty. No matter the situation, she always speaks the truth. So this would be a cardinal trait. क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था कि महात्मा गांधी is known for non-violence, right? So वो उनका cardinal trait हो गया. And here Ananya is known for honesty. So that is her cardinal trait. Next, which concept is based on Bandura's social learning theory? Very direct question, self-efficacy. इस वाले question में this was actually B. So now there's also a trick to answer this. So इसमें बहुत ही direct definitions दिए हुए हैं. अगर हम third वाला लें, the presence of a noxious stimulus or stressor leads to the activation. This is obviously alarm reaction. So 3 का answer हो जाएगा 4. 3, 4 किस में given है? इसी वाले में, और किसी में तो नहीं given. So this is the answer. Next, the white blood cells, also called as leukocytes, within the immune system identify and destroy foreign bodies which are called antigens. So it's D. Then creative visualization helps in managing stress by using imagination and imagery. This is a correct statement. It is more effective when the mind is quiet, the body is relaxed and the eyes are closed, as this minimizes distractions and enhances focus. This is also correct. So इसका answer will be this because this is also the correct reason for this. Next, Dash is characterized by widespread impairments in social interactions and communications. This is autism. Your friend failed an important test. You sit with him or her, listen to his or her feelings and try to understand the experience without judgment. तो ये कौन सी quality हुई? This is empathy because you're trying to understand your friend's experience. Right? Then, a therapist working with children with ADHD gives them a star sticker each time they complete a task after collecting 5 stars. So it's like tokens. So this is token economy. Next, according to the concept of balance proposed by Fritz Heider, imbalance is found when all 3 sides of the QX triangle are negative or 2 sides are positive and 1 is negative. So this is 1 and 3. In an attitude change when the change is in the same direction as the existing attitude. So like positive attitude becomes more positive or negative attitude may become more negative. This is called congruency. This is called congruency. Chapter 6 का question है. जब same direction में attitude change होता है then it is called congruent. Okay, that was all for section A. Now let's move on to section B. Identify 2 differences between psychometric theories and information processing theories of intelligence. So इसमें आपको simply बस दोनों theories को differentiate करना था. So जैसे psychometric theories में term क्या होता है? एक होता है it is an aggregate
ऑफ एबिलिटीज़ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में होता है. It tries to understand the underlying function of intelligence, right? So even if you look at what is given in your book, अब यहाँ पे जैसे aggregate of abilities हो गया, and second हो गया expressed in terms of a single index of cognitive abilities. Information processing में क्या होता है? The major focus is on how an intelligent person acts, and rather than focusing on structure, it focuses on the underlying dimensions. इसमें अगर आपने example भी दिया है इस in theories का, then that would also fetch you marks. Then find out the IQ of 14-year-old child with a mental age of 16. Very easy 2-marker. IQ का formula क्या होता है? MA/CA into 100. So हमें IQ पता है IQ निकालना है, and we know the mental age which is 16, and we know the chronological age which is 14. So simply you just had to apply this formula and you would have gotten your answer. Okay, moving on to the next question. Somatic symptom और illness anxiety में क्या difference है? This is also a very very direct and a very easy question. Somatic symptom disorder में the people are convinced that they have physical complaints, right? But there is no biological or organic cause to it. Illness anxiety disorder में the anxiety is the main concern. They're so anxious about their health कि उनको कुछ हो जाएगा, and they make frequent visits to the doctor, and जैसे भी किसी ने थोड़ा सा भी बताया अपनी illness के बारे में, they'll get easily alarmed, right? So main key term इसमें आएगा anxiety. So illness anxiety में it is the anxiety which is the main concern, even though both disorders are connected to medical illnesses, but this is the key difference. Next, specify any 2 processes that help in attitude formation and explain how it occurs. Very simple. Attitude form कैसे होता है? Learning through association, learning through reinforcement की reward या punishment से, learning through exposure to info, और learning to cultural और group norms. So अगर इनमें से आपने लिखा है कुछ, then of course, and you have explained with an example, then yeah, this was also a very easy question, a very direct one. So okay, what I see till now is कि section B तो काफ़ी direct है, मतलब कुछ घुमा फिरा के तो नहीं पूछा, except for the last question, which is question 19. Riya feels a strong sense of belonging and emotional attachment with her childhood family dance group. But when she joined the school council, she followed rules and communicated formally. Identify the 2 types of groups. हमने 3 types पढ़े हैं. हमने पढ़ा है primary versus secondary. हमने पढ़ा है formal versus informal. और हमने पढ़ा है in group versus out group. तो इनमें से आपको पहचानना था कि कौन सा टाइप ऑफ ग्रुप है, कौन से टाइप्स ऑफ ग्रुप्स हैं जिसका रिया पार्ट है. सो अब यहाँ पे इट्स अ चाइल्डहुड फैमिली डांस ग्रुप. उसके पास ऑप्शन नहीं था, उसको वो दिया गया है ना. सो इट इज़ अ प्राइमरी ग्रुप. एंड सेकेंड, स्कूल काउंसिल इज़ फॉर्मल इन नेचर, सो इट इज़ अ फॉर्मल ग्रुप. तो इसमें आपको एक्सप्लेन करना था कि रिया इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्राइमरी ग्रुप when she talks about her childhood family dance group, and a formal group when she talks about the school council. And आपको इन दोनों को explain करना था कि ये क्या होता है. Again, a very easy question. Moving on, section C. Rohan, a 10-year-old diagnosed with intellectual deficiency as per AAMD guidelines, is supported with a special education plan. Based on his diagnosis, identified 2 common features he might display in his daily functioning. So इसमें बहुत ही directly given है that it is intellectual deficiency, right? Intellectual deficiency बहुत simple है. Intellectual deficiency के 2 common features क्या होते हैं? सबसे पहला तो there is significant and sub-average level of functioning. Second, there is deficits in maladaptive behavior, and third, it is manifested during the developmental period. तो अगर इन तीनों में से अगर आपने कोई भी 2 एक्सप्लेन करे हैं एंड क्वेश्चन से रिलेट करा है, रोहन का नाम लिखा है आंसर में, देन दैट इज़ योर आंसर टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट,
Riya is on a strict diet because she wants to stay healthy and prepare for her upcoming school sports competition. One evening, she opens the fridge and sees a big delicious cake and her mom made for family dinner. She immediately feels the urge to eat it but plans to eat it after the competition. As per Freud's theory, explain Riya's behavior in terms of id, ego and superego. अगर वो ये केक खा लेती तो उसका प्लेजर प्रिंसिपल वर्क करता बिकॉज इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए कि अभी खाना है अभी खाना है. सो दैट इज़ इड, बट इन दिस केस इट वॉज नॉट इड. सुपर ईगो अगर होता तो मे बी वो बोलती कि इफ़ आई ईट इट देन माई पेरेंट्स वुड स्कोल्ड मी, देयर वुड बी एन अथॉरिटी फिगर इन दैट केस, बट वो भी नहीं हुआ. सो इट वॉज नॉट सुपर ईगो. सो हियर शी वॉज वर्किंग, हर ईगो वॉज मोर डोमिनेंट. शी वॉज वर्किंग ऑन द reality principle because she was able to delay the gratification of her needs according to the reality कि sports competition के बाद I'll have this cake. She was focused more on reality, right? So अगर इसमें आपने explain करा है कि ego क्यों ज़्यादा dominant है, reality principle का mention करा है, और इसमें आपने ये भी refute करा है कि id और super ego क्यों नहीं होगा. So I think that would be your complete answer. Next, individuals show consistent individual differences in the coping strategies they use to handle situations. These can include both overt and covert. Identify the 3 coping strategies given by Endler and Parker. Very, very simple. इसको याद करने का तरीका was T. So task oriented, emotion oriented, avoidance oriented. That's all that you have to explain and you would have gotten 3 marks. Next, इसका बी पार्ट भी करते हैं. रुचिका इज़ वेरी स्ट्रेस्ड एज शी मस्ट प्रिपेयर फॉर हर म्यूजिक कॉम्पिटिशन एंड मेडिकल एग्जाम. सजेस्ट रुचिका 4 टेक्निक्स टू मैनेज हर स्ट्रेस. तो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स में क्या था हमारा? देयर वाज क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, देयर वाज रिलैक्सेशन टेक्निक, देयर वाज एक्सरसाइज, देयर वाज बायो फीडबैक. हाँ, सो अगर इनमें से आपने कोई एक्सप्लेन करी है, एक्चुअली 4 ही एक्सप्लेन करने थे, तो अगर आपने ये एक्सप्लेन करे हैं देन ऑफ कोर्स दैट इज़ योर 3 मार्क क्वेश्चन. दो आई एम नॉट श्योर कि इसमें 3 मार्क्स क्यों, बिकॉज यू हैव टू एक्सप्लेन 4 टेक्निक्स, बट या यू हैव टू एक्सप्लेन 4 स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स. इवन इफ यू लुक एट योर NCERT चैप्टर 3, आई कैन ऑल्सो शो यू ये आंसर कहाँ से आया था. सो दिस वॉज stress management technique. So there's relaxation, there's meditation, there's biofeedback, there is creative visualization, there's CBT, and there's exercise. तो इनमें से अगर आपने कोई 4 एक्सप्लेन करी है, so that is your 3 marker answer. Next, Reena constantly thinks I must succeed at everything or I am a failure, which causes her distress when she makes small mistakes. How can RET help Reena overcome her psychological distress? Mention 3 steps involved in RET. Very, 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 very simple, very direct question. Chapter 5 का क्वेश्चन है, एल्बर्ट एलिस की थेरेपी है. तो इसमें आपको पहले एक्सप्लेन करना था कि RET क्या होता है, फिर इसमें आपको एक्सप्लेन करना था ABC एनालिसिस के बारे में, बिकॉज दे क्लियरली आस्क्ड अबाउट द स्टेप्स एंड हाउ वुड इट हेल्प हर. राइट, कि इसमें कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस भी होते हैं एंड इरेशनल बिलीफ्स होते हैं. दैट इज़ व्हाट यू शुड हैव फोकस्ड ऑन. ऑल्सो मैंशनिंग व्हाट थॉट्स इज रीना एक्सपीरियंसिंग, कि आई एम अ फेलियर, आई मस्ट सक्सीड, एंड वो सब कि मस्ट्स और शुड्स वाला एस्पेक्ट आ जाता है इरेशनल बिलीफ्स में. And here you also had to explain non-directive questioning, because that is what the therapist uses as a technique and that is what helps the client. So this was your answer for RET. Next, elaborate on the concept of buddhi and specify how intelligence in the Indian tradition lays emphasis on its connectivity with social and environmental world. बहुत easy question है. इसमें आपको इंटेग्रल इंटेलिजेंस के बारे में बताना था. जेपी दास ने जो बुद्धि का कॉन्सेप्ट दिया है उसके बारे में आपने एक्सप्लेन करा इंट्रोडक्शन. इंटेग्रल इंटेलिजेंस क्या होती है? इट फोकसेस ऑन कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव प्रोसेसेस. सो इट इज़ वेरी होलिस्टिक इन नेचर. दैट इज़ व्हाट यू कुड हैव मेंशन्ड इन दिस आंसर. एंड इसके 4 फैसेट्स होते हैं. सो देयर इज एकेडमिक कॉम्पिटेंस, नो सॉरी, देयर इज कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस,
There is entrepreneurial competence, there's emotional competence and the social competence. इन्होंने मेनली फोकस किया है सोशल और एनवायरमेंटल वर्ल्ड पे. तो अगर हमने चारों फैसेट्स मेंशन करे हैं, लेकिन उसमें स्पेसिफिकली entrepreneurial और सोशल को आपने एक्सप्लेन करा है, इमोशनल भी टू सम एक्सटेंट अगर आपने एक्सप्लेन करा है, then that is your 4 marker answer. Next, individuals who are categorized as having intellectual disability show significant variation in their abilities, ranging from those who can be taught to work and function to those who cannot be trained. Identify their categories according to IQ range and specify their potential functionalities. Very easy question. इसमें आपको चारों explain करने थे: mild, moderate, severe and profound. So mild कितने से कितने रेंज में होता है, मॉडरेट कितने में होता है, प्रोफाउंड कितने में होता है, सिवियर कितने में होता है, और सबके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. दिस वाज अगेन अ वेरी वेरी इजी एंड अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन. Next, Ritika has been feeling anxious, socially withdrawn, and unable to manage her daily routine. She decides to see a psychotherapist. Over the course of several sessions, she begins to feel heard and supported. Based on this case, elaborate on the factors that contributed to Ritika's psychological healing through psychotherapy. Healing through psychotherapy. If you remember, chapter 5 के end में there are 4 factors that contribute to healing. तो इसमें आपको वो mention करने थे. The first factor is catharsis, when the client is able to unburden himself and unburden himself. Second होता है there are some non-specific factors, जिसमें आता है client variable और patient variable और therapist variable. Third इसमें था nature of relationship. तो कि अगर जो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप है वो बहुत ही ट्रस्टिंग है, बहुत ही वार्म है, देयर इज़ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, कॉन्फिडेंशियल है, तो इसमें आपको नेचर ऑफ थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप में वो लिखना था, बिकॉज इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हीलिंग. एंड लास्ट यू हैड टू मेंशन द टेक्निक्स अडॉप्टेड. सो अगर थेरेपिस्ट सही टेक्निक्स नहीं अडॉप्ट कर रहा है तो दैट वुड नॉट लीड टू हीलिंग. बट हियर यू ऑल्सो हैड टू मेंशन कि अगर टेक्निक्स अडॉप्ट सही करिए एंड एज पर व्हाट द क्लाइंट नीड्स, देन इट वुड लीड टू हीलिंग. So yeah, this was your answer to the 25th question. A very direct 4 marker here as well. I hope you guys remember कि जब भी ऐसे केस बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आंसर में हमेशा आपको नाम ज़रूर मेंशन करना है. जिस इंसान के बारे में लिखा गया है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे गए हैं, वो ज़रूर आंसर में लिखना है. सो यू हैव टू रिलेट योर क्वेश्चन टू योर आंसर. Next, prejudice can be difficult to change due to its deep-rooted sources. Imagine you're working on a community outreach program. How would you explain the main causes that lead to development of prejudice? Very easy. इसमें आपको sources लिखने थे. तो sources prejudice में क्या था? There is scapegoating. There is kernel of truth concept. There is self-fulfilling. Then there is learning. So यही आपको इसमें एक्सप्लेन करने थे, द मेन सोर्सेज ऑफ प्रेजुडिस. सेल्फ-फुलफिलिंग प्रोफेसी. सॉरी. द लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी गेट ऑन टू सेक्शन ई. आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सबसे ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन था इस पूरे सेक्शन का. तो ओके, सो हियर यू हैड टू आइडेंटिफाई कि कौन सा फिनोमेना है. अब इसमें सबसे पहले रिया हु यूजुअली वर्क्स एफिशिएंटली व्हेन अलोन नोटिस्ड अ ड्रॉप इन हर प्रोडक्टिविटी. वेरी सिंपल, दिस वाज सोशल लोफिंग. क्यों? क्योंकि आप सोशल लोफिंग क्या होता है कि आपका जो एफर्ट होता है, इंडिविजुअल एफर्ट होता है, जब आप ग्रुप में काम कर रहे हो आपकी प्रोडक्टिविटी, एफर्ट वो सब कम हो जाता है. दिस इज सोशल लोफिंग. सेकेंड, अर्जुन परफॉर्म मच बेटर ड्यूरिंग फाइनल प्रेजेंटेशन दैन ड्यूरिंग रिहर्सल्स. दिस इज समथिंग कॉल्ड सोशल फैसिलिटेशन. सोशल फैसिलिटेशन आपने यहाँ पढ़ा है हियर. सो बेसिकली सोशल, दिस इज चैप्टर 7, राइट. सोशल फैसिलिटेशन क्या होता है? सोशल फैसिलिटेशन इज व्हेन अ पर्सनस परफॉर्मेंस इंक्रीजेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल. सो हो सकता है कि रिहर्सल्स में देयर वाज नो ऑडियंस बट फाइनल ग्रुप प्रेजेंटेशन में देयर वाज. सो उसका जो परफॉर्मेंस था इट इम्प्रूव्ड. दिस इज कॉल्ड सोशल फैसिलिटेशन. Meanwhile, during a debate, the group members who initially had mild views became more extreme. जो ग्रुप का आइडिया था वो बहुत ही पोलराइज हो गया.
दिस इज़ ग्रुप पोलराइजेशन. मतलब अगर वो पहले इधर थे माइल्ड और ऐसे न्यूट्रल आइडिया पे थे, बट अब एक दूसरे की बातें सुन के वो एक्सट्रीम पे चले गए हैं, यहाँ चले गए हैं या यहाँ चले गए हैं. सो इट इज़ ग्रुप पोलराइजेशन. Next, while playing tug of war, only Ria's teammates contributed less efforts in the group task compared to working alone. This is also social loafing. So, based on the above situation, identify and explain any 4 psychological concepts related to group influence on individual behavior. Basically, इस वाले क्वेश्चन में आपको ये चारों एक्सप्लेन करने थे, क्योंकि आपने ये चारों फिनोमेना पढ़े हैं specifically related to group influence. There was another phenomenon that you have studied which is group think, right? But इन चारों में से कोई भी group think का नहीं था, तो आपको ये explain करना था. But also here social loafing ना 2 बार repeat हुआ है, तो उन्होंने बोला and explain any 4. So here you could have also explained group think, ताकि आपके वो 4 question की demand पूरी हो जाए. So yeah, this is what you have to explain here. Moving on to section E. Direct techniques of personality assessment come with their own drawbacks, especially related to social desirability. In such a condition, suggest other methods of personality assessment which can tap the unconscious of the individual. Mention any 4 such effective techniques. Again, very simple question, very direct question. इसमें आपको direct techniques का सीधा नुकसान बता दिया. अब आपको क्या करना है, आपको कोई ऐसा पर्सनालिटी असेसमेंट का मेथड आइडेंटिफाई करना है जो अनकॉन्शियस पे टैप कर सके. ऐसा कौन सा होता है? प्रोजेक्टिव टेक्निक्स. एंड मेंशन एनी 4 सच इफेक्टिव टेक्निक्स. इसमें आप रोशाक, TAT, सेंटेंस कंप्लीशन, ड्रॉ पर्सन टेस्ट, इसमें से आप कोई भी एक्सप्लेन कर सकते थे. रोजेंस्वीक्स पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडीज, इन 5 में से आप कोई भी 4 एक्सप्लेन कर सकते थे टू मेक योर आंसर कंप्लीट. व्हाट वुड हैव ऑल्सो हेल्प हियर इज़ कि अगर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थोड़ा सा, मे बी एन इंट्रोडक्शन. सो डायरेक्ट टेक्निक्स क्या होती हैं? द असेसर नोज दैट दे आर बीइंग असेस्ड, द असेसी नोज दैट दे आर बीइंग असेस्ड, सो दे वुड गिव सोशली डिजायरेबल आंसर्स. But in the case of projective or indirect techniques of personality assessment, the person does not know the purpose and there's no correct or wrong answer, and even the stimuli is unstructured or poorly defined. So ye differentiation might have like given a small, maybe like a small introduction to your answer which might have enhanced your answer. तो अगर आपने वो लिखा है और projective techniques कोई भी 4 tests को अगर explain करा है, so I think that is your answer for this question. While simple and opinion type theories truly capturing the uniqueness of every individual, the rich diversity of human personality are debatable. Type theories attempt to place individuals into distinct categories based on shared characteristics. Many types of theories have shaped how we view personality. Elaborate on the theories by type approach. very simple. इसमें आपका शेल्डन का थ्योरी आ गई, एंडोमॉर्फ्स, मीजोमॉर्फ्स एंड एक्टोमॉर्फ्स. इसमें आपकी यूंग की आ गई, एक्सट्रोवर्ड्स वर्सेस इंट्रोवर्ड्स. देन इसमें आपकी फ्राइडमैन एंड रोजनमैन की थ्योरी आ गई, टाइप ए, टाइप बी एंड मॉरिस गेव टाइप सी एंड टाइप डी. उसके अलावा चरक संहिता में जो त्रिगुण दिए हुए हैं या फिर जो त्रिदोष दिए हुए हैं या फिर जो हिपोक्रेटीज ने दिया है, सैंग्विन, कॉलेरिक, मेलनकॉलिक वाली जो थ्योरी है, इसमें अगर आपने मेंशन करी है, देन अगेन दिस क्वेश्चन, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू राइट इन दिस क्वेश्चन. ओके. Ravi has been showing signs of extreme social withdrawal and erratic mood swings. As a psychology student, how would you apply different approaches, models, factors to understand and explain any abnormal behavior? Here you had to explain, इसमें आपके आप बायोलॉजिकल फैक्टर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जेनेटिक को कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल मॉडल्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट द डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल को एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो इसमें अब वेरी इजी क्वेश्चन है. सो व्हाट आर द अप्रोचेस, मॉडल्स और फैक्टर्स दैट वुड एक्सप्लेन दिस abnormal बिहेवियर और एनी abnormal बिहेवियर. सो ये अगर आपने एक्सप्लेन करा है, सो दिस इज़ द आंसर टू योर क्वेश्चन. एंड ऑल्सो आई होप दैट यू रिलेटेड योर आंसर टू रवी's केस. नेक्स्ट, psychological disorders have come a long way in their journey of understanding and treatment of disorders. To understand this, we would require a brief historical account. When we study the history, we find that certain theories have occurred repeatedly. Trace the history of disorders to understand their origin and leading to the latest developments.
very very easy. पूरा history explain करना है, सीधे सीधे 6 mark का question. This was also a very very direct question. Moving on to section F. Okay, let's read the case study. Ritu is a high school student preparing for her final board exam. She is academically bright and wants a scholarship. However, over the past few weeks, she has been feeling overwhelmed and frustrated. She's constantly comparing herself to her peers, which causes her to feel caught between her wishes. At home, her parents have high expectations and remind her frequently that she must top the class, adding on to the increasing self-demands. Ritu also finds herself in a conflict of being caught between choosing a career she's passionate about and what her parents want. Additionally, she feels unspoken demands and a social pressure from her relatives who keep asking her about the future. As a result, she has become irritable, frequent headaches, trouble sleeping, and feels emotionally exhausted. Based on the symptoms described, identify the types of stress Ritu is experiencing. जो अच्छा 3 टाइप के स्ट्रेस होते हैं. देयर इज़ सोशल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड फिजिकल एनवायरमेंटल. यहाँ पे जो मेन टाइप का स्ट्रेस है वो हमें दिख रहा है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस. अब उसके डिफरेंट सोर्सेज क्या है? हमें यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन भी दिख रहा है, यहाँ पे हमें कॉन्फ्लिक्ट भी दिख रहा है, यहाँ पे हमें इंटरनल प्रेशर भी दिख रहा है बिकॉज शी इज़ ट्राइंग कि वो अपने अंदर से उसके अंदर बहुत प्रेशर है कि शी हैज़ टू डू वेल एंड देयर इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ social pressure. So this was your answer for this question. Mention one emotional and one psychological effect of stress she may be going through. Emotional में तो even though they've mentioned psychological, I really think this should have been physiological. Okay, so emotional reaction. She becomes irritable. She is emotionally exhausted. She is feeling there was another overwhelmed. ये उसके emotional symptoms हो गए. Psychological effects of stress. Actually, we have not studied psychological effects of stress, but if they meant cognitive, then I think cognitive भी इसमें mention नहीं करा गया है. Physiological of course mention किया है कि उसको frequent headaches हो रही हैं, है ना, and behavioralist, she's having trouble sleeping. So yeah, I am again about this, I'm not really sure why they have mentioned psychological, because if you go through your chapter 3 effects पे हम आते हैं chapter 3 में. So you studied emotional, you studied physiological, cognitive and behavioral. Psychological तो हमने पढ़ा ही नहीं है. There is also one more place जहाँ पे effects mentioned है. यहाँ पे भी you studied physiological, behavioral, emotional and cognitive. So I'm not sure why they've written psychological, but yeah, let's see what CBSE has to say about this. Okay, next and the last question. Shreya's parents brought her to school counselor after noticing noticeable weight loss over the past 8 months, skipping meals and avoiding dinners, constant complaints of feeling too fat despite appearing underweight, loss of energy, irritability, frequent mood swings. Shreya herself insisted that everything is fine, expressing frustration about being forced to discuss her eating habits. So she's suffering from eating disorder. Specifically कौन सा disorder है ये वाला? This is anorexia nervosa and explain the various other forms. तो इसमें आपको explain करना था. Anorexia nervosa आपने कर दिया, so it's a 2 marker, right? And there are 3. तो एक तो आपने already कर दिया mention, तो इसमें आपको bulimia nervosa and binge eating would be your answers. Okay, that's it. I think this was a fairly easy paper. Of course, कुछ ऐसे questions थे जो काफ़ी indirect थे and कुछ ऐसे questions थे हर section में जो काफ़ी घुमा फिरा के आए. Though I think section E was pretty simple and pretty direct. Section D में I think 27th question was something जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा. Apart from that, section D and E were pretty easy and pretty direct. For section C, I think it was again pretty direct. Section B as well. I think इसमें the one question that might have forced you to scratch your brain a bit
would be question 19, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि डांस ग्रुप तो एक सेकेंडरी ग्रुप है, राइट, बट दे हैव ऑल्सो मेंशन दैट इट्स अ चाइल्डहुड फैमिली डांस ग्रुप, सो समथिंग कि रिया को ऑप्शन नहीं था चूज़ करने के लिए, उसको वो गिवन है, इट्स अ प्री एग्जिस्टिंग फॉर्मेशन, so it's primary, and when you follow rules it's formal. And apart from that, I think section A was pretty simple, pretty direct, and yeah, looking forward to good results. Let me know if you have any doubts in the comments below. Okay, bye.